Hi, sir. Trying the transition to become a tuchha prani. Okay, great. I have this bias of buying under rupees 500 good quality stocks instead of rupees 5,000 plus stocks, as I get better averaging opportunity. For example, buying a basket of stocks every week of total 2,500. Will that be a good strategy for long term early investor? So I think, Abhishek ji, I understand if the stock price is more than 5,000 rupees, the averaging is very difficult. You will not be able to do that on a weekly basis. Specifically, you are saying that you want to invest 2,500 rupees. So completely agree. So for this only the solution is mutual funds, nothing else. Otherwise, definitely you will have to select these stocks which are trading at much lower price, and that's how you can invest and you can do the averaging. So which one will give you more returns? It will totally depend on which company you are selecting for that averaging. So it totally depends on that. सो दैट्स वाई ये जो स्प्लिट, ये बोनस, ये जो चीजें होती है, जस्ट टू टेक डाउन दोज प्राइसेस, एंड दैट्स वाई दीज कंपनीज डू. whether it is right or wrong, I think definitely liquidity point भी है, एक चीज होती है, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में बहुत ज्यादा आ गए. सो दैट्स वाई ये एक्शंस इनकी तरफ से ली जाती है, कंपनीज की तरफ से ली जाती है. इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? आई थिंक फाइनेंशियली, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो दीज आर जस्ट एडजस्टमेंट्स. बट सेंटिमेंटल जो होता है कि भाई 5,000 रुपए का स्टॉक और 500 रुपए का स्टॉक, तो वहां पे 500 रुपए का थोड़ा सा फेवर ज्यादा होता है. बट इट विल टोटली डिपेंड ऑन विच कंपनी यू हैव सिलेक्टेड, और उसके प्रोस्पेक्ट्स आने वाले समय में कैसे है.